In an intelligence-led operation in the early hours today, India struck the biggest training camp of Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fadain action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, the brother-in-law of Masood Azhar, who is the chief of Jaish-e-Mohammed. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fadain action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we've been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। लेकिन जब दुश्मन अपनी सरहदें पार करके इस्लामी मुल्क में दाखिल हो गया, उसके तैयारों ने मुसलमानों के मराकिज पर बमबारी कर दी। दुश्मन की तरफ से ऐलाने जंग हो गया। अब दुनिया की कोई किताब उठा के लाओ और बताओ कि जिहाद अब भी फर्ज़े किफाया है या फर्ज़े अहम हो चुका। जहां तक तुम बात करते हो कि ये जिहाद एजेंसियों की लड़ाई थी, इंडिया के तैयारे किसी एजेंसी के सेफ हाउस पर आकर बमबारी करके नहीं गए। इंडिया के तैयारों ने एजेंसी के किसी हेडक्वार्टर पर बमबारी नहीं की। इंडिया के तैयारों के ढोलों का निशाना देखो, कौन सी जगह बनाई गई, वो कौन सा मकाम था। वो जगह थी जहां एजेंसियों की मीटिंगें होती थी, या ये वो जगह थी जहां सारे दिन बैठकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की रोशनी में जिहाद को समझते थे। और आज जो उनके 14 जहाज आए, जिस दिन जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहाँ बैठे हैं, मदरसा तालीमुल कुरान एक है, जरूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और जिन दरख्तों को वो नुकसान पहुंचा के तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों कर सकती। ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। So they waited for that. कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को मौके पे ले जाया जाए और इस वक्त वो हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, आपके सामने है। ज़रा मौसम अगर परमिट करता है तो हेलीकॉप्टर्स पे उनको अभी ले जाया जाएगा मौके पर। कि एक ज्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल
کی طرف آتے ہوئے اور جب چیلنج کیا اور واپس جاتے ہوئے. یہاں سے جو تنگ دھار سیلینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے ان کی انٹروژن ہوئی. 4 to 5 ناٹیکل مائل ان کی فارمیشن اندر آئی, جس کو پاکستان ایئر فورس نے ٹائملی اور افیکٹولی چیلنج کر کے ریپلس کیا. جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا پے لوڈ تھا اس کو جیٹسن کیا. اتنے ڈسٹنس سے جو اس وقت اینگل تھا اس کا ایگزٹ کا, جو اس کا پے لوڈ تھا, وہ جبہ کے مقام پر 4 ان کے جو بامبس تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے. جب وہ طیارے آئے ان کی آواز سے بہت سخت آواز تھی نا, تو میں جاگ گیا. جب میں اٹھا تو ایک دم ہی پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا. جب وہ دھماکہ ہوا تو میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ یہ کوئی خطرناک کیا کام. جب میں دروازے کے پاس آیا تو تیسرا دھماکہ, یہ آپ کے سامنے ہے جگہ, تقریباً 15 کلومیٹر ہوگی, 15 میٹر ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی. ادھر دوسرا دھماکہ ہوا. جب وہ دھماکہ ہوا اس کے ساتھ دروازے ٹوٹ کے سارے. پھر ہم ادھر ہی بیٹھ کے, میں بھی اور میری بیٹی ہے گھر والی. میں نے کہا ابھی تو ٹائم برابر ہی ہے, تو چلو شہادت ہی ہے, مرنا ہی ہے. تو اس کے بعد چوتھا دھماکہ جب ادھر ہوا, تھوڑا نیچے ہوا, تو اس کے بعد ہم ادھر ہی بیٹھے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اٹھے باہر نکلے تو باہر دیکھا درخت ٹوٹے ہوئے تھے, مکان کی دیواریں, چھت وغیرہ سب وہ آپ کے سامنے, آپ نے دیکھ لی ہے. جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا, اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے.